Hello friends, very good morning to all of you. Today we are going to read the poem, beautiful poem written by William Wordsworth, and the title of the poem is She Was a Phantom of Delight. Dear students, we must know a little about the poet William Wordsworth. Let me tell you something about him. William Wordsworth is known as a nature poet. He is also called the father of romantic poets, or we can say romantic revival. You know that the romantic revival in literature started in 1770 and it ended in 1820. During this period of 50 years, we have many poets like William Wordsworth, Shelley, P.B. Shelley, John Keats, Byron, William Blake, Robert Southey, etc. They all were the romantic poets. Their literature, their poems, their work had something different features and characteristics from their predecessors, from their past. The past period from Wordsworth is known as the neoclassical, in which we have Pope, Alexander Pope, John Dryden, Herbert, etc. Then we have also a transitional period in which we have Tennyson, we have Thomas Gray, etc. So let's come to our poet William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770 and he died in 1850. As I told you, he is the best known figure of romantic period, and he and Coleridge also one of the best romantic poets or the nature poet. Both of them worked together, and there is a publication of their collaborated work, that is Lyrical Ballads, which published in 1798. So this is the most important work, and another most important work of William Wordsworth is said to be the Prelude. The Prelude, a semi-autobiographical poem that he wrote in his youth. And in the Prelude, in this epic, in fact, it's a kind of epic poem. It's a long poem. So it describes about the poet's unfalling love and permanent love, we can say, for nature. This poem was revised several times by the poet, and he worked on it during his whole life. And this prelude, published posthumously, means after the death of William Wordsworth. He focused his poetry on the personification of nature and its relationship with man. So William Wordsworth finds
a living being in the nature. He calls nature as his teacher, as a guide, as well as a spirit, soul, and therefore the religion of the poet William Wordsworth, so far love for nature is concerned, is called pantheism. That means that when you believe in nature, when you see a spirit in nature, that is called pantheism. He was an ardent lover of nature. So, moreover, his poems describe intense emotions. These are the main source of his aesthetic experience. And also, past and nature are meant to be glorified by the use of spontaneous language. So, his language is also spontaneous in his poetry. Now, come to a little introduction about the poem which we are going to read or study or analyze. That is, She Was a Phantom of Delight, which written in 1803 and published in 1807. It is said that William Wordsworth wrote this poem for his wife Mary Hutchison. So the description that we have in this poem, although that is for the unreal picture that the poet sees, but it refers to his own wife. That is, Wordsworth later in his life said about that she was a phantom of delight. It was written from my heart. So this poem is a lyrical ballad with an A, A, B, B, C, C, D, D, E. This is the rhyme scheme of this poem. There are 3 stanzas in this poem, and every stanza contains 10 lines. So the first line is rhyming with the second one, third line is rhyming with the fourth one, fifth one is rhyming with the sixth, seventh with the eighth, and ninth with the 10th. In this way, the rhyming scheme of this ballad, this lyrical ballad, is there. And meter so far is the iambic tetrameter, that is the 5 meters, stress, unstressed, in this way, the rhythm of the poem. So here we have the description, that is the poem narrates 3 stages, 3 moments in relationship between the lyrical voice and the woman she refers to in the poem. So a relationship between the poet, here the lyrical voice is the poet himself, and the woman that he sees refers to his wife. So he talks about the 3 moments, that when he first saw his wife, then the middle, then they got to know each other better, and then in the last the occurrences that took place after their marriage. So how he saw her after the marriage, how he saw for the first time, and how he saw her in the middle of the first and last. So this is about the poem. Now we shall go with these lines. What are there? So the first stanza, let me recite. She was a phantom of delight when first she gleamed upon my sight, a lovely apparition sent to be a moment's ornament. Her eyes as stars of twilight fair, like twilights to her dusky hair, and all things else about her drawn from Maytime and the cheerful dawn, and dancing shape and image gay, to haunt, to startle, and the waylay. So phantom is something unreal, just like a ghost we can see, that the real one sees. जैसे हम कोई भूत प्रेत देखें, है ना, तो उसको फैंटम कहते हैं. तो यहाँ शी से पोएम स्टार्ट होती है.
शी जिसको भी पोइट रेफर कर रहा है, जैसे हमने बैकग्राउंड में देखा कि वो अपनी वाइफ को जिसको पहली बार देखा था उसके लिए रेफर कर रहा है। तो करेक्ट, शी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, शी वॉज फैंटम ऑफ प्लेजर, शी वॉज द फिगर ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस फॉर हिम। कब? when first she gleamed upon my sight. So when the poet saw her for the first time, he found her an object of pleasure. That is, she seemed to him as unreal, because ghosts are our imaginary creation, they are not real. A lovely apparition. So it was a beautiful figure, apparition, a picture sent to be a moment's ornament. So this lovely phantom, lovely figure was the moment's ornament for him. For a moment it was an ornament, decorated. And now he describes her. Her eyes as stars of twilight fair. उसकी आंखें जो थी वो जैसे ब्यूटीफुल जो ट्वेलाइट होता है, ट्वेलाइट के जो स्टार्स होते हैं, मानी जो संध्या के तारे जिसको हम कहते हैं, शाम का तारा, उसकी तरह बोले उसकी आंखें सुंदर थी, चमक रही थी। लाइक ट्वेलाइट्स टू हर डस्की हेयर। और पोइट फिर यहाँ ये भी कह रहे हैं उसके जो बाल थे, डस्की बाल, देखिए आप, डस्क जैसे बाल, डस्क जानते हैं, डस्क मीन्स डस्क इज सपोज टू बी द इवनिंग टाइम, शाम का समय जो होता है उसको हम डस्क कहते हैं। और डस्क एक तरह से डार्कनेस और ब्लैकनेस को भी कहते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में डार्कनेस और ब्लैक हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो जैसे उसके जो डार्क हेयर थे वो भी किस तरह थे, ट्वेलाइट की तरह थे। अर्थात ट्वेलाइट वही शाम का टाइम, वही इवनिंग का टाइम, डार्कनेस का टाइम, तो उसके डस्की हेयर थे। बट ऑल थिंग्स एल्स अबाउट हर ड्रॉन, लेकिन और अन्य सब बातें, but all things else about her drawn means her appearance, her personality, her picture from May time and the cheerful dawn, they were also, here the poet compares, her with the May time. May time is supposed to be the time of spring, that is the symbol of youth. So she was very young, the poet means to say, and the cheerful dawn, as well as she was also the cheerful dawn. Dawn means morning. उषा काल जिसको अपन कहते हैं हिंदी में, जब सूर्योदय होने से पहले के समय को हम डॉन कहते हैं, मानी उसको उषा काल कहते हैं। तो उषा काल की तरह बहुत ही चेयरफुल वो जो है, बिल्कुल ताजगी जिससे महसूस हो, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू, डांसिंग शेप। और क्या कहता है पोइट उसके लिए, वो कैसे लग रही थी, उसका डांसिंग, उसका जो शेप था, उसका जो फिगर था, that was just like dancing, movement was there in her figure, an image gay, and the image was very gay, beautiful, very beautiful. और जो इमेज जो था ब्यूटीफुल, वो किस लिए था, so that you can haunt, to startle and waylay. So you can haunt her, माने आप उसको देखते ही रहें, उसको स्टार्टल करते रहें, घूरते रहें, उस पर आश्रय, अमेजिंग, शी वॉज ए अमेजिंग फिगर, एंड waylay. और इस तरह से शी वॉज जस्ट लाइक a comfort for a traveler. जैसे कोई रास्ते में आप कहीं रुकें आराम करने के लिए, इसी तरह से कि उसको देखने से जो सारी जो फैटिगनेस है, जो टायर्डनेस है, वो दूर हो जाती है. That was she, and she was the phantom of delight. So I have here explained the meaning of these lines. And the important thing is here that the poet is here describing that woman with a beauty of unreal quality. उसके अंदर जितनी भी ब्यूटी है that is unreal.
बिकॉज दैट फिगर इटसेल्फ वाज अनरियल, फैंटम वर्ड यूज हुआ है, लेकिन चूंकि ये अपनी वाइफ को रेफर करता है, और वाइफ को जब रेफर करता है कि भाई उसको जब मैंने पहली बार देखा तो उसके अंदर ये उसकी जो ब्यूटी थी दैट वाज विद अनरियल क्वालिटीज, जिन पे कि अपन इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये पहली बार का जो है वो बताता है। इस प्रकार से आप इसकी पीडीएफ को जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा शी हैज ऑल्सो बीन डिपिक्टेड इन एन इथीरियल वे एज शी इज कंपेयर टू स्टार्स इन द ट्वेलाइट। इथीरियल में कहने का मतलब शी इज नॉट अर्थली बीइंग, कि वो अब कोई भी जैसे भूत प्रेत होता है वो भी अर्थ का थोड़ी होता है, उसको भी हम इथीरियली मानते हैं कि ये तो आकाशीय है, हेवनली है, क्योंकि हवा में गायब हो जाता है। इसी प्रकार से उसकी कंपेयर जो है कि पोइट उसको जो है इथीरियल से करता है, ट्वेलाइट से करता है, ये सब जो है कि अर्थ से परे हैं। और फाइनली चीयरफुल डॉन उसने बताया ये। और जो अनरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस वुमन की, वो गे हैं, चीयरफुल है, डांसिंग है, एटसेट्रा। नाउ कम विद द सेकेंड स्टेंजा, आई सो हर अपॉन नियरर व्यू। तो सेकंड, ये तो पहली बार देखा, अब सेकंड स्टेंजा में पोइट ये कह रहा है कि उसके बाद मैंने उसको थोड़ा क्लोजर, जब मैं उसके पास में आया तो उसको नजदीक से देखा। आई सो हर अपॉन नियरर व्यू ए स्पिरिट येट ए वुमन टू। और जब नजदीक आकर के देखा पोइट ने, तो क्या पाता है उसको, शी को या उस फिगर को, उस फैंटम को, दैट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर, कि दैट वाज ए स्पिरिट, कि वो उसको एक स्पिरिट पाता है, लेकिन yet a woman too, लेकिन फिर भी एक वुमन। इट मीन्स दैट द पोइट फाइंड्स बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पिरिट एज वेल एज ऑफ ए वुमन। इट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अनरियल and the real he found in that woman. Understand? Okay. Her household motions light and free. उसके जो now he describes, the poet describes her household motions, क्योंकि अब जब देख लिया, नज़दीक आ गए, इसका मतलब है कि वो साथ रहने लग गए, ठीक है। तो उसके जो हाउसहोल्ड जो मोशंस हैं दे आर लाइट एंड फ्री एंड स्टेप्स ऑफ वर्जिन लिबर्टी, और उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो मूवमेंट्स हैं, उसके चलने का जो है, दैट इज वर्जिन लिबर्टी। इट मीन्स शी वॉज टोटली वर्जिन, शी वॉज एंजॉइंग द वर्जिन लिबर्टी, यानी शी वॉज नॉट मैरिड यट, शी वॉज यंग, शी वॉज ए गर्ल एट दैट टाइम, शी वॉज ए वर्जिन। वर्जिन का मतलब है जिसकी शादी नहीं हुई हो, कंवारी। तो कंवारेपन की जो लिबर्टी शी वॉज एंजॉइंग, एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन हर स्टेप्स। जब चलती है तो ऐसा लगता है कि शी इज स्टिल अनमैरिड। अ काउंटेनेंस इन विच डिड मीट स्वीट रिकॉर्ड्स। और अगर जब उसका काउंटेनेंस देखा जाए, काउंटेनेंस का मतलब है उसका चेहरा, उसका अपीयरेंस देखें, तो उसमें क्या है कि स्वीट रिकॉर्ड्स हैं, प्रोमिजेज एज स्वीट। और जो उसमें जो प्रोमिस हैं, उसके अपीयरेंस से ये लगता है कि जैसे वो कुछ प्रोमिस कर रही है, कुछ वादे कर रही है। दे आर ऑल्सो स्वीट, स्वीट प्रोमिजेज। अ क्रिएचर नॉट टू ब्राइट और गुड। देखिए हाउ द पोइट बैलेंस। सो उसको स्पिरिट भी कह रहा है, वुमन भी कह रहा है, ठीक है। उसके जो अपीयरेंस में है वादे हैं, वो भी बहुत स्वीट हैं। और वो कह रहा है ए क्रिएचर नॉट टू ब्राइट और गुड, ऐसा क्रिएचर जो न ज़्यादा ब्राइट है और अच्छा है फॉर ह्यूमन नेचर्स डेली फूड। तो ऐसा क्रिएचर जो ज़्यादा चमकीला भी नहीं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर्स डेली फूड। कि ह्यूमन नेचर का जो डेली फूड है, डेली फूड क्या है ह्यूमन नेचर का? We all are suffering with transient sorrows, simple wiles, praise, blame, love, kisses, tears and smiles. ये हमारे डेली का भोजन है। हम कभी दुखी होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी ब्लेम करते हैं, कभी किस करते हैं, कभी लव करते हैं, कभी आंसू बहते हैं, कभी मुस्कुराहट होती है।
तो ये हमारा डेली का फूड है। और ये जो लेडी थी, ये वुमन थी, that was also that kind of creature in which you have all these things. Therefore the poet has called her not too bright or good. जबकि ऊपर के स्टेंजा में, ऊपर की लाइंस में कह रहा है, काउंटेनेंस इन विच डिड मीट स्वीट रिकॉर्ड्स प्रोमिजेज एज स्वीट। ही ऑल्सो कॉल्स हर वर्जिन लिबर्टी, लेकिन एट द सेम टाइम he also found in her the creature which was not so bright or good. So इसमें जैसे जैसे क्लोजर आता है तो ये जो अनरियल स्पिरिट कहता है उसको, ये लिरिकल वॉइस है जो पोइट है जो अपने आप में, और उसमें क्या है कि द पोइट फाइंड्स दैट शी हैज द ह्यूमन क्वालिटीज। एक तरफ तो अनरियल है, स्पिरिट है, स्पिरिचुअल है, या जो कुछ इथीरियल है, लेकिन दूसरी तरफ शी हैज ऑल्सो ह्यूमन क्वालिटीज टू, जस्ट लाइक ए वुमन हैज। तो इस प्रकार से वो उसको जेंटल सॉफ्ट हाउसवाइफ के रूप में देखता है, क्योंकि वो हाउस होल्ड वर्क्स करती है, मोशंस उसके लाइट एंड फ्री हैं। ओके, और उसके बाद में वो कहता है कि चूंकि वो ह्यूमन क्वालिटीज रखती है इसलिए वो क्रिएचर है, लेकिन वो क्रिएचर तो है लेकिन वो इतनी ब्राइट और गुड नहीं है। तो उसमें क्या है कि इमेज ऑफ द वुमन इज नाउ पोर्ट्रेट इन अ मोर रियलिस्टिक वे। सो द इमेज ऑफ ए वुमन हियर हैज बीन डिपिक्टेड इन ए मोर रियलिस्टिक वे, कि वास्तव में वुमन का जो पोर्ट्रेशन जो है यहाँ पे किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है, क्योंकि वुमन एक्सपेरिमेंट्स द ह्यूमन नेचर्स डेली फूड। ये ह्यूमन नेचर के जो डेली फूड है इनका हम सब जो एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनको अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से ये वुमन भी एक्सपीरियंस कर रही है। और वो क्या है डेली फूड? ट्रांजिएंट सोरोज हैं, सिंपल वाइल्स हैं, प्रेज है, ब्लेम है, लव है, किसेज है, टीयर्स हैं, स्माइल्स हैं, एटसेट्रा। तो इन द सेम वे द लिरिकल वॉइस हैज ए रेवरेंशियल टोन that with the regular rhythm, rhyme, meter emphasizes the hyperbolic descriptions towards the woman. Okay, so in these two stanzas, notice how the lyrical voice uses. Here lyrical voice means the poet. The references to nature when he or she wants to explain the woman's unreachable qualities. Okay, now let's come with third stanza of the poem. This is the last stanza of this poem, and we would be finishing this poem today. So now this is the third stage, how the poet sees this phantom of delight. So he says, now I see with eye serene the very pulse of the machine. कि अब मैं जो है कि इसको in a more factual way में जो है कि उसको पोइट देख रहा है. The poet is now looking at her with eye serene, means बहुत ही फैक्चुअल में, रियल वे में. तो वो क्या पा रहा है? दैट द वेरी पल्स ऑफ द मशीन. सो दिस वुमन हैज बीन नाउ कंपेयर्ड हियर विद अ मशीन. दैट इज, दिस वुमन इज नाउ वर्किंग जस्ट लाइक ए मशीन, एंड वी नो व्हाट हैपन्स विद द वुमन इन द हाउस. दे वर्क लाइक ए मशीन from the morning to the night. They work. A being breathing thoughtful breathe. और क्या कहता है पोइट उसको? She was a being breathing thoughtful breathe. बहुत ही विचारपूर्ण जो है कि वो श्वास ले रही. इसका मतलब she was very thoughtful. Then he calls her a traveler between life and death. So now the poet or the lyrical voice calls her a traveler, एक राहगीर. किसके बीच में? Between life and death. She is a traveler who is traveling between life and death. The reason firm, and she is very determined. The temperate will, and her wills are temperate, moderate. Will ज़्यादा कोई strong नहीं है, अर्थात उसकी कोई चाह नहीं है. ठीक है, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है. This happens with every woman in our households after the marriage. तो पहले जब देखा वो, उसके बाद नज़दीक आए, और उसके बाद शादी होने के बाद में क्या परिवर्तन पोइट जो है कि उस वुमन के अंदर देखता है और पाता है उसको, वो है इसमें एंड्योरेंस है, उसमें फोरसाइट है, उसमें स्ट्रेंथ है, स्किल है. बिकॉज
She is doing all kind of work in the house. She has strength. She has skills to perform all the duties. Therefore, the poet calls her a perfect woman. See, nobly planned, who was planned nobly by God, created by God, to warn, to comfort, and to command. And these qualities have also been put into her by God to warn, to comfort. She is always ready to give comfort. She also warns at certain time and command, as well as she has also the power to command. फिर भी अर्थात एक तरह से अर्थली फिगर होने के साथ साथ में पोइट फिर कहता है यट आई स्पिरिट स्टिल, लेकिन फिर भी अभी भी वो एक स्पिरिट के रूप में अनरियल है, हेवनली स्पिरिट है, एंड ब्राइट विद समथिंग ऑफ एंजलिक लाइट, अर्थात शी इज स्टिल जस्ट लाइक सम एंजलिक लाइट, जैसे कोई एंजल से हेवनली लाइट हो उसके अंदर, इतनी ब्राइट शी इज स्टिल देयर even after working too much, even after doing too much, even after working like a machine, even after she is the symbol of comfort, she is the symbol of command, she is the symbol of warning, all these things. So here, as we have seen, that she has been described as a machine, she can work but she is still alive, काम कर रही है लेकिन फिर भी alive, a being breathing, thoughtful breathe, a traveler between life and death, breath and death. Moreover, again the poet calls her that she is as a perfect woman, she is balanced, does everything in the right manner, the reason, firm, the temperate will, endurance, foresight, strength and skill. And in this way the poem ends by a final enumeration of her duties, abilities and characteristics. To warn, और उसकी duties हैं, ये abilities हैं, warn करने की, comfort करने की, command करने की, and yet I spirit is still and bright with something of angel light. So this is how we have seen this poem, a beautiful poem written by William Wordsworth. My dear students, I hope you have followed me, you have understood this poem, and you will enjoy this poem as well. So prepare yourself with a comprehension of this poem from the examination point of view also. Go through the PDF of this video lecture and you will better understand the poem. So now, bye, goodbye, thank you very much, see you.